The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. So, what you have been told here, children, that even the most laid-back individuals, laid-back means even the most lazy kind of individuals. Laid-back means those who are never in a hurry, कि जिनको कभी किसी काम की जल्दी नहीं है, आराम से कि चलो ठीक है. So, even those kind of lazy individuals, they are going to become converted to the life of high energy. They are also going to be exuberant with energy. So I hope you have been able to understand that even the most laid back individuals, that means that even the most lazy individuals are going to be converted to high energy individuals with the life that is prevailing in this part of India. कि जो यहाँ का जीवन है, कुर्ग का जीवन है, यहाँ पे जो आपको एडवेंचर मिलेगा, जो यहाँ पे आपको एडवेंचर स्पोर्ट मिलेगा, वो आपको एक लेड बैक इंडिविजुअल से एक हाई एनर्जी इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर देगा. और ये कैसे होगा? ये होगा यहाँ के जो हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जो यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनके थ्रू. अब एडवेंचर स्पोर्ट्स में यहाँ पे क्या क्या है? रिवर राफ्टिंग. सो रिवर राफ्टिंग यू वुड वेल नो. कनोइंग, कनोइंग मीन्स अ काइंड ऑफ बोटिंग, दैट इज कॉल्ड कनोइंग. एक तरीके की बोट होती है, दैट वी कॉल एज कनू. रैपलिंग, रैपलिंग इज ऑल्सो जस्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम अ क्लिफ, कि एक ऊंची सी चट्टान से एक रस्सी बंधी होती है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू स्लाइड इट डाउन from one rock to another. So that is called rappelling. So that kind of a rappelling activity is also there. Rock climbing, mountain biking. So this place is really full of so many adventure sports that it is going to convert you to a high energy individual from a lazy individual. तो यहाँ पे आप अगर आप जाएंगे तो आप जो वो एकदम आपकी नीरसता है, वो जो आपकी एकदम थकावट वाली सिचुएशन है, उससे आप एकदम हाई एनर्जी इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे. इतना यहाँ पे एक्साइटमेंट है. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. So there are trekkers also. Those who trek the mountain. कि जो माउंटेन में ट्रेकिंग करते हैं या जो फॉरेस्ट में ट्रेकिंग करते हैं, पैदल चल करके जाते हैं, तो उनके लिए भी ये इलाका जो है ये बहुत ही पसंदीदा है. And numerous walking trails in this region are there. तो बहुत सारे walking trails, चाहे आप माउंटेन ट्रेकिंग करिए, चाहे आप जंगल की ट्रेकिंग करिए, तो इस तरीके से numerous walking trails आपको इस इलाके में मिल जाएंगे. So this is really an area of high energy. कि मतलब आप कभी भी यहाँ पे बोर हो ही नहीं सकते हैं. Birds, bees and butterflies are there to give you company. So what you have been told here, children, that if you make a visit to Coorg, definitely this is the special kind of company that you are going to get in there, along with the company of your friends. Or apart from the company of your friends, you are going to get some new friends here in the form of birds, bees and butterflies. कि आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे birds, bees और butterflies के फॉर्म में. Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. So what else you have been told? That from the tree canopy, from the height, from the dense trees, these are the animals that are going to have a watchful eye on you. Macaques, they are also some animals which are found in the jungles. Malabar squirrels, langurs and slender loris. ये स्लेंडर होता है, दुबला पतला गिलहरी जैसा होता है, आगे टोंट ऐसे निकली रहती है और बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही लेजी होता है. So these are the animals which are going to have an eye on you. They would see whether you are going to harm them or not. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. So what the writer is telling you here, that he would like to step aside just in order to get the company of wild elephants. कि राइटर क्या कह रहा है कि वो थोड़ा सा साइड में उतर करके जाएगा और जंगल में वाइल्ड एलिफेंट्स की कम्युनिटी को एंजॉय करना चाहेगा. तो डेफिनेटली इफ यू विजिट साउथ इंडिया, इफ यू विजिट केरला एंड कर्नाटका, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू see the elephants in various roles. They are going to help their mahouts carry the loads of logs. They are also going to be seen in the parks providing entertainment to children and adults. So elephants are used there in variety of ways. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. So children, apart from these things what you have been told here, that if you visit Coorg, you can also go to the Brahmagiri. And when you have reached to the height of Brahmagiri, from there you are going to get a panoramic view of the entire Coorg. Panoramic view means you are going to get a bird eye view, means
a view from the height of the entire Coorg that is going to be misty, that is going to be foggy, कि जो कोहरे की चादर से ढका हुआ कुर्ग का व्यू है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ियां हैं तो बादल काफी रहते हैं कि जिसकी वजह से थोड़ी सी धुंध छाई रहती है, तो वैसा आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा जो मिस्टी होगा। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। तो यहीं से अगर आप एक रोप ब्रिज पर वॉक करते हैं तो रोप ब्रिज पर वॉक करके आप एक आइलैंड पे जा सकते हैं जिसको निसर्गधाम कहा जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सो यू कैन एंजॉय योरसेल्फ विद निसर्गधाम ऑल्सो। तो ये चीजें आपने देखी। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. So, children already have been told about the fantasies, already have been told about the beauties that are associated with Coorg. And apart from it, there is a bonus point also that may be had if you make a visit to Coorg, and that is getting an opportunity to visit Bailakuppe. That is India's largest Tibetan settlement. The Tibetan people have been living here, and if you go there, you are going to come across Buddhist monks. आपको बुद्धिस्ट सन्यासी मिलेंगे बाइलाकुप्पे में, और यहाँ पे विजिट करना, ये समझिए ये तो एक बोनस है, ये तो समझिए कि एक एडिशनल बेनिफिट है आपको कि वहां जाकर के आप बुद्धिस्ट monk के भी दर्शन कर सकते हैं जो कि तिब्बत के रहने वाले हैं। The monks in red, ochre and yellow robes are among the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. So what you have been told here, that the visitors who come to Coorg, that the visitors who search the heart and soul of India in Coorg, they would also be able to get the company of the Buddhist monks who are dressed in red colored clothes, who are dressed in ochre. Ochre means a kind of orange color. Ochre colored clothes and yellow robes. Robes means that gown kind of a thing that the Buddhist monks are wearing. So you would come across these kind of monks who are dressed in red, ochre and yellow robes. And definitely this is going to be one of the many surprises that you are going to find here. कि ये उन बहुत सारी सरप्राइजेस में से एक है कि जिसको आप यहाँ पे पा सकते हैं, और उन लोगों को बहुत ही सुखद अनुभव होगा कि जो कुर्ग में इंडिया की जीवन शैली को, इंडिया के हार्ट एंड सोल को तलाशने के लिए आते हैं। तो in this way children we have completed this unit related to Coorg, and then we'll be starting with the next chapter.